Hey guys, Namaskar, Sat Sri Akal. So I have talked about in last lecture about formulas. So I have listed some formulas so you can recall it and remember this formula and note it down in your notebook. So it will be more punctual for you. So remember this formula. Okay. So you need to remember there is no alternative things to do. Okay. So you need to remember. ओके सो हम बात करेंगे सर्टन फार्मूले है यहाँ पे. सो लिस्टेड आउट किया मैंने 13 फार्मूले, उससे भी ज़्यादा भी लगेंगे. सो यू नीड टू नो दिस फार्मूले. सो मैं पेज और टर्न ओवर करने जा रहा हूँ. ओके सो यू कैन राइट डाउन फार्मूले. ओके दीज आर द सम फार्मूले. And it will help you a lot in upcoming video, and you will be master of integration after some time, because everywhere you require this integration, physics, maths, chemistry, for research purpose. Okay, so guys, please write it down these formulas, so it will required for upcoming video. So these are the 13 formulas I have written over here, and these are the some formulas. So let's come to the main subtopic of integration, integral form of the form. It will be the linear upon quadratic, okay, into dx, and similarly px plus q upon root of quadratic equation into dx. There are certain steps to solve this tedious numericals. So as I will written over here the 3 steps, so you need to remember these things, and by practicing these sums you will be the master in integration. You don't need any formulas or not to remember all these things. So once you did correctly and thoroughly, then you don't require any step. You will see the sum and you directly apply the concept. So please thoroughly do, and by practicing lots of sums you will be the master. So हम स्टेप नंबर 1 पे आते हैं. तो एक्सप्रेस पी एक्स प्लस क्यू, मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का. ओके प्लस बी सम कांस्टेंट, बिकॉज हमको कंपेयर करना है ना. सो वी नीड टू कंपेयर, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस. ओके सो स्टेप नंबर 2, गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक और सेम, मतलब सिमिलर जो टर्म होंगे, जैसे पावर ऑफ एक्स है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पावर ऑफ एक्स होना चाहिए, तो हम लोग कंपेयर करेंगे. ओके सो दीज आर द सम स्टेप. एंड थर्ड वन स्टेप इज रिप्लेस पी एक्स प्लस क्यू, मतलब न्यूमरेटर को हम लोग उसका जो भी आएगा हम लोग को सॉल्व करके. ओके बिकॉज इसमें ही तो हम लोग को करना है, यही तो मेन है, जो ये फॉर्म को हम लोग को सॉल्व करना है. सो वी नीड टू सॉल्व दिस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ, आपको तो पता ही है डेरिवेटिव, बिकॉज आप मास्टर हो, यू आर गोइंग टू बी मास्टर इन इंटीग्रेशन. ओके सो 2x ax plus b directly I have written the derivative of this in this form. And if you expand now, just by putting the third step, what you will get, just put here, and these are the some step you will get. So third step is not it's a expression. So let's come to the example. Integration 5x minus 1 upon 3x square plus x plus 2 into dx, लीनियर इक्वेशन. ओके सो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें पावर x का 1 हो. ओके सो वी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. एंड इन डिनोमिनेटर यू कैन सी हियर पावर इज 2, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये पावर इज 3, देन यू विल गोइंग टू कॉल एज क्यूबिक इक्वेशन. ओके so these things are small thing you need to remember. So step number 1, as I talk about this step,
5x minus 1 equal to a, and what is the derivative of denominator? 3x plus x plus 2. So I express in the step as a step I have written over here. So I will do the derivative, and you can see here a into derivative of 3x square, you will get 6x. And what is the derivative of x? 1. And what is the derivative of constant? You will get 0. Okay, irrespective of, means whatever we do, whether it's a 1 lakh, 1 billion, 1 million, it doesn't matter, it's going to be 0, constant. Plus b, 5x minus 1 equal to 6. If you expand na, so you will get this one, means you have to multiply a in bracket, so you will get 6ax plus a plus b. So you can see here, just by comparing x with x, you will get 5 equal to 6a, and you will get a equal to 5 by 6. Just by taking this side, it was a multiply, and if you take other side now, you will get divide. A equal to 5 by 6, a plus b equal to minus 1. From second one I have got this. So ये मेरे को सेकेंड इक्वेशन मिला, जस्ट बाय कंपेयर किया मैंने इसको. सो यू कैन सी है, एंड जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, यू विल गेट बी का वैल्यू एज अ -11/6. एंड सेम मैं इसमें सिमिलर फैशन में अभी मैं इसमें पुट करूँगा एक्सप्रेशन में. सो ये स्टेप नंबर 3 होगा. इट विल बी स्टेप नंबर 3. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? It's a -11/6. Okay. So these I have got from there. So you can see here. So as I said here, I am going to substitute in place of 5x. So you will get 5 by 6 into 6x plus 1, okay, upon 3x square plus x plus 2. Am I right, guys? I am going to split because you can see here. So you can see, if you rearrange the term now, so you will get this one. So this is -1. So if you multiply by plus or minus, you will get minus. So 11/6, 1/3x plus 2 2d. So you can see here, what is the, if you see the denominator now, its derivative is present in numerator. So देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे what is the derivative of 3x square, you will get 6x. And what is the derivative of x? 1. And what is the derivative of 2 constant? You will get 0. So you can see I am directly substitute log property. You can see formula I have written over here. If function in denominator, if function its a derivative present in numerator, so you can directly apply the log. Okay. And if you go, you can also check in my previous video. Okay, so I am going to apply this formula, so I will get this one. And I am going to solve this separately because it will take long time.
Okay, so it will not. So if you know, in my previous video I have explained this. We need to make coefficient of x square as a unity, so we need to take common outside. So I will get 1 by 3 and x square plus x by 3 plus 2 by 3. If you remember, and you can just watch my last previous video, so you will be able to understand what is going on. Okay, so आप देख सकते हो मेरे पिछले वाले वीडियो में. So I am going to make perfect square. So what I am going to do, same in last video. So what will be it going to be? Don't take this one as a, because I am solving this one only, because I have got one answer as, and second part is this one. So I will separately, I am going to solve this and then I will combine, club this. Okay, so don't be in dilemma. So what I am going to get, what is a coefficient, means half multiply, means you have to do 1 by 2 into 1 by 6, 1 by 36 you have to add on both sides. Okay, add and subtract, because we have to make perfect square. Okay, so what I am going to get, so मुझे मिलेगा x प्लस 1 बाय 6 का ये होल स्क्वायर हो गया, एंड इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर 36 12. Okay, so and you will get here 1. Okay, so I'm going to get 11 by 36 as my. Okay, so you can see here formula number, as I explained you, it's work on formula number 1, means you can see here it's a perfect expression what I have explained in the earlier videos. So you can see what you will get, integration of 1 upon x square plus a. What is the a here? Root 11 by 6. Okay, and equal to 1 by a. A will be root of 11. Okay, sorry guys, I got some wrong. It will be 23. Okay, it's my mistake, sorry guys. 23 it will be. So guys, you can see here I am using the formula number which I have listed in the formula list. So you can see here first formula which I have given you here. So some of the formula, as I again and again I am going to tell you, you need to remember this formula. On the basis of formula you require in the solving the tedious problems, and without knowing the formula you can't do anything. Okay, so guys please इसको याद रखो. You need to remember. There is no alternative way to remember without practicing. So guys, हम क्या करेंगे? So minus 18 by a, and you can see here tan inverse 1 by a. What is the a? Root 23. Okay, it's a multiply. And मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, सो आप समझ के लो सर. ओके, सो यू विल गेट tan inverse. What is x? X plus 1 by 6. Okay, and here a is root 23 by 6. Okay, plus
सी. ओके, सो गाइस अभी हमें रीअरेंज करना है टर्म को. वी नीड टू रीअरेंज द टर्म. सो व्हाट यू विल गेट, you can see here 6 is going to be cancelled from here, so you will get 3 and minus 11 by 3. Okay, root 23 tan inverse. If you rearrange the term na guys, so you will get 6x plus 1 upon divided by 6. Okay, and 23 divided by root 23 divided by 6 is going to be cancelled. सो आपको मिलेगा ये पूरा आंसर 1/3 tan इनवर्स 6x प्लस रूट 23 प्लस सी. बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है, मैंने पहले ही बोला है. ओके, टोटल आंसर गोइंग टू बी सम ऑफ इंडिविजुअल आई हैव गिवन यू ना. मतलब मैंने पहले आधा लिया था क्योंकि वो पहले आंसर आ गया था, हमें और सॉल्व करना था क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. It's a very tedious problem, so we need to separate. I have done that totally separate, means you can see here what I have done, and you can see 5 by log of 3x square plus x plus 2 minus 11 by 323 root 23. Okay, tan inverse of 6x plus root 23 plus c. Don't forget to write plus c. Okay, so guys ये हमारा टोटल आंसर है. so ये हमारा पूरा है. गाइस प्लीज़ ये सम पे थोड़ा फोकस करो और इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना है. ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लो और उसको सॉल्व करो, and you will see the result. Your confidence will be boost up. Okay, so guys ये बोर्ड में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. so you need to focus on that only. Okay, every type of problem you should think and start doing problem. Without trying problem you can't think of it. How to start the problem, how to solve it. Okay, जब तक हम पेन नहीं उठाएंगे तब तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. लाइफ में सेम है, लाइफ ऑलवेज टीचेज अस हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम. और ये कैसे होगा? बाय प्रैक्टिसिंग. ओके, और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आपको चाहिए. एंड आई विल गिव यू द फ्यू सम सो यू कैन डू द प्रैक्टिस. इफ यू डोंट गेट, let me know in a comment section box. Okay guys, so I am going to give you some question, so please note it down. So evaluate. So problem number 1. Same form, integration, linear upon quadratic. Are you getting guys? And second one, last one, I will not going to give more than 2 questions, so please do practice at your home and thoroughly do, because there, if you want to mastery in the integration, you must do, and you have to do. It's a compulsion for you. I'm not forcing you. Okay, I'm not forcing you, so you need to do. And second problem should be there, so you can see here. So I want to know how you are going to tackle this problem. If you don't get na, at least you should give idea, so how to proceed further. Okay, so guys ये बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, और इस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंटीग्रेशन में. ओके, और MSCET में इंजीनियरिंग के जो भी है एग्जामिनेशन लाइक जेई मेन, जेई एडवांस, बट वो ट्रिकी होते हैं. ओके,
सो और MSCT में तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलेज बेसिस क्वेश्चन आते हैं. सो डायरेक्टली यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलेज. ओके, सो ये जितने भी सारे मैंने लिस्टेड आउट किए फॉर्मूले, सो यू नीड टू रिमेंबर all the formulas you require for your competitive exam like JEE Main, MSCT, or either any kind of exam you are appearing for. You require these formulas. Even though in definite integration, differential equation, everywhere you require these formulas. So guys, please आप ट्राई करो, अच्छा अपना दो, अपना बेस्ट दो. ओके, सो मैं यही बोलूँगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही बोलूँगा मैं, और कुछ नहीं बोलूँगा. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड. थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत. स्टे होम, स्टे सेफ.